Morning, student of class 5th. Hope you are fine at home. Today we are going to start a new video of your English literature book. So kindly open page number 76, chapter number 10, A Letter from Shimla. Today we are going to study this story. I am going to read this story. You will put a finger on your book wherever I am reading. Okay, chapter number 10, A Letter from Shimla. एक लेटर कहाँ से आया है? शिमला से आया है. आइए हम स्टोरी के बारे में जानते हैं और पढ़ते हैं और समझते हैं. Here is a letter from a young girl to her friend describing her new place of living. यहाँ पे एक स्टोरी है जो बता रही है कि उसकी एक फ्रेंड है, वो अपना न्यू प्लेस कहाँ पे वो रहती है उसके बारे में ये स्टोरी बताई गई है. और उस लेटर में उसे ये मिलता है कि उसका एक न्यू प्लेस कहाँ पे है. रीड एंड फाइंड आउट द इंटरेस्टिंग थिंग्स शी मेंशन इन द लेटर. आपको उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ को, इंटरेस्टिंग चीज़ को ढूंढना है, जानना है और पहचानना है. तनिषा एंड जेनी वर स्कूल फ्रेंड. They lived in the big city of Mumbai. Tanisha's father was in the Indian Army. जो तनिषा है उसके पापा कहाँ पे हैं? इंडियन आर्मी में हैं. और वो कहाँ पे रहती है? मुंबई में रहते थे. He was posted at Shimla in हिमाचल प्रदेश. उनका पोस्टिंग हिमाचल प्रदेश में हो गया. कहाँ पे? शिमला में. So Tanisha's family moved to a peaceful and quiet hill station away from the noisy and polluted city. जो भी सिटी मुंबई में थी वहाँ पे बहुत सारा पोल्यूशन था, वो वहाँ से मूव कर चुके थे. कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में मूव कर चुके थे. उनकी पोस्टिंग हिमाचल प्रदेश में शिमला में हुई थी. आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है. तनिषा हु वॉज अ बिग एंड चेयरफुल गर्ल वॉज फुल ऑफ एनिमल स्पिरिट. जो तनिषा थी उसको बहुत पसंद थे एनिमल्स. एट स्कूल शी वॉज constantly getting into trouble on the account of her tomboy habit. All the school children were fond of her and missed her when she left. But Jenny missed her the most. क्यों मिस ज़्यादा जेनी ने किया? क्योंकि वो उसकी फ्रेंड थी. Jenny and Tanisha were just the opposite. वो एक दूसरे के एकदम अपोजिट थे और एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड्स थी. Jenny was a quiet girl. Nevertheless, the two girls were bosom friends. वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थी. Tanisha had promised Jenny that she would be in the touch for her new home. 6 months had elapsed and finally Jenny received a letter. Jenny को लेटर मिलता है तनिषा के थ्रू से. 157/6 मॉल रोड. उस लेटर में क्या लिखा होता है? हिमालय HP October 5,
2018. Dear Jenny, hello. Did you think I have forgotten you? Well, I have not. That can never be. उस लेटर में लिखा होता है, हेलो जेनी, क्या तुम मुझे भूल गई हो? क्या तुम ये सोचती हो कि मैं तुम्हें भूल गई हूँ? बट ऐसा कुछ भी नहीं है और ये पॉसिबल कभी हो भी नहीं सकता है. A series of events took place since we left. I shall relate them to you. Perhaps then you would not be so upset. You surely would remember that it was raining on the day we left Mumbai. Well, it was raining in Shimla too. वो अपनी सारी स्टोरी बता रही है कि ये ऐसा ऐसा हुआ था. And it went on raining for the whole month. In Shimla, one cannot run automobiles on the road during the rainy season. सारी कंडीशन वो बता रही है कि ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं यहाँ पे. I had to walk to school every day in the pouring rain. मुझे स्कूल इस pouring rain में जाना पड़ता है. My Mumbai made rain shoes were of no help. I had to buy new one with thick soles that would prevent me from slipping on the sloped road. Finally the rain stopped and since then the weather has been fine. उसने बताया कि यहाँ पे जैसे मुंबई में मैंने न्यू शूज़ लिए थे अपने, वो शूज़ यहाँ पे अब वर्क नहीं करते हैं, वो ख़राब हो चुके हैं. मैंने न्यू शूज़ लिया है जिसका सोल थिक है और वो मुझे फिसलने से बचाता है. कहाँ पे? स्लिपी रोड पे, जो स्लोपी रोड्स हैं हिमालय की, वहाँ पे उससे वो बचाता है. नेक्स्ट पैरा. बट द स्कूल हियर माय डियर इज़ अनदर इंटरेस्टिंग थिंग्स. इट डज नॉट स्टार्ट till 9:30. It is a little school with only 5 rooms, unlike our school in Mumbai. That was very big. Mr. Sinha, the headmaster here, is a tall fellow. He is lame and wears spectacles. He has a will short of a temper, but he is not a bad sort of person. वो अपने प्रिंसिपल के बारे में, हेडमास्टर के बारे में बता रही है अपनी फ्रेंड को. Just imagine, I am in the senior most class. The queerest things about the school is the way the children talk here. I could not understand all they said. वो उसको लैंग्वेज नहीं समझ में आती है. They have a different Asian and so they used to laugh at me whenever I opened my mouth to speak. It was a fun. One of the boys asked me why I spoke English differently. I told him that how we speak in Mumbai. Hearing this, the other children became keen
to know more about the things that are different in Mumbai. This was the beginning of a new relationship. हमारा न्यू रिलेशनशिप ऐसे स्टार्ट हुआ. The teachers here are really nice. They call me my dear, but unlike how we all speak in Mumbai, they say it with a strong array that rolls and rattles through their tongue. The girls here are very fond of playing rounders, and one should see them to know this interesting games. Slow is not the word for it. They run around like flashing light. I realized that rounders was not my cup of tea, so I asked the teacher if I should play cricket instead with the boys. She looked at me dumbfounded and said, "Don't talk like a tomboy." I had to constant myself with rounders. Oh, let me tell you about our little house. वो अपनी सारी स्टोरी अपनी फ्रेंड को बता रही है कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, ये चीज़ है. We live on the top of the green hills. Here are 4 cottages in a cluster and ours in the center. I have got a cozy little bedroom on the top. The sun is more than welcome every morning. I stand outside for half an hour before leaving for school. The sun keeps us warm in winter. The food here is a totally changed over. Punjabi food is quite popular with the restaurants of Himachal. They add a lot of ghee and red chili to the dishes. The food is high, but it is yummy too. अपनी सारी प्रॉब्लम्स या अपनी फ्रेंड को बता रही है. Well, I have picked in quite enough. Now it is your turn to write. Don't forget to mention what Tanisha, Jen and Ritika are up to these days. And also let me know how your darling puppy Sandy is doing. I am sure it is too must be missing me. Give my love to all at home. Miss you. Hips of love, you ever, Tanisha. Jenny rushed to her table and switched on the lamp. Taking a piece of pen and paper, she started writing. Dear Tanisha, I just read. ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है तनिषा और जेनी के बारे में. आप लोग इस स्टोरी को पढ़िए और समझिए. ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो. Take care. Bye.